अच्छा चलें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा वो क्विक रिकैप भी कर लें कि क्या क्या हमने किया था, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं शिफ्ट इसलिए हो गया हूं ताकि वो नोट्स वगैरह ना अच्छे बन जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था कि यू हैव केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। मेनली इट वाज द केमिस्ट्री ऑफ, अच्छा, इट वाज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या एक्सप्लेन किया था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ना यू मेक फॉसिल फ्यूल्स आर मेड आउट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आफ्टर बिलियंस ऑफ years. So that was all ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर ये था कि क्या आई टोल्ड यू कि हु मेक्स हाउ मेनी बॉन्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज, ठीक है। वी लर्नड हाउ टू मेक स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो हाउ डू यू मेक स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज के यू शुड नो हु मेक्स हाउ मेनी बॉन्ड्स। तो उसके अंदर था कि ग्रुप जो आपका 7 है, that makes how many bonds? That makes one bond. It needs one electron. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Achha, you have got group 6. It needs 2 electrons, so it makes 2 bonds. उसमें जो common ones are oxygen and sulfur. Group 5 है, that makes, it needs 3 electrons. 5 होते हैं उसके outer shell में electrons. It needs 3, so it makes 3 bonds, ठीक है। So you've got nitrogen and phosphorus. और आपका फिर group 4 है, that's going to make 4 bonds. और उसमें कौन है, कार्बन वाले, कार्बन एंड सिलिकॉन, राइट। एंड देन देयर इज अ हाइड्रोजन एटम व्हिच मेक्स ओनली वन बॉन्ड। उस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट मेक्स एग्जैक्टली वन बॉन्ड, ठीक है। तो we did structural formulas. I'm just going to do a couple of examples कि you should know who makes how many bonds. So if I just randomly start connecting molecules, ठीक है, एक इधर ऑक्सीजन जोड़ देता हूँ, and let's say I have a lot of H atoms, ठीक है। अच्छा, normally we always have a lot of H atoms. 92% of the universe is H atoms. तो हर जगह ना H के एटम्स ना वो वैसे ही बीच में कहीं ना कहीं फिट हुए होते हैं, ठीक है। तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि कार्बन, हाउ मेनी H atoms will get attached to this carbon atom? Sir, 3. ठीक है, तो इस वाले के साथ 3 होंगे। अच्छा, वो अगला वाला, द नेक्स्ट ऑक्सीजन, हाउ मेनी H atoms will be attached to this oxygen? 0. क्योंकि उसके 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन, हाउ मेनी H atoms with this carbon? 0. ठीक है, वो 0 है। वो ऊपर जो N है, हाउ मेनी H atoms with that N? 0. 1. 1. हाँ, 1 होगा, ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी 1 H, ठीक है। अच्छा, अगला आ जाओ कि हाउ मेनी H atoms with this carbon? 2. और उससे अगला ऑक्सीजन, 1. ठीक है, तो 1। तो देयर इज गोइंग टू बी 2 H atoms एंड देयर इज गोइंग टू बी 1 H atom, ठीक है। तो ये था कि आपको देख के ना पता लग जाए कि हु मेक्स हाउ मेनी बॉन्ड्स एंड इज द फॉर्मूला करेक्ट और नॉट, ठीक है। अच्छा, देन वी डिस्कस्ड कि भाई वो दे आर इन्फिनिट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब अर्थ के ऊपर ना देयर आर जस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एवरीवेयर। ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर आर बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो व्हाट नीड्स टू हैपन इज कि यू नीड टू हैव अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, you need to have, जी रीना, क्वेश्चन है। अच्छा, you need to have a classification system। ये मैं बस पिछला रिकैप कर रहा हूँ ताकि वो नोट्स एक ही जगह पे बन जाए, ठीक है। एंड दैट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नोन एज के कुछ एनिमल किंगडम है, इतने डिफरेंट वैरायटी के मॉलिक्यूल्स है
you need to have some sort of classification system, and that's known as the homologous series. ठीक है, और homologous series क्या होता है? It's a family of organic compounds which have certain similar properties. वो किसी को याद है क्या थी? Family of organic compounds having what? Same general formula. अच्छा, so having same general formula, Same functional group. And same physical properties. नहीं, वो physical properties same नहीं होंगी. Having same functional group, Same chemical properties. एक second रुकनेस. अच्छा, सेम फंक्शनल ग्रुप. वो फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट ठीक था, लेकिन not same. They show trends in physical properties. They all have physical properties. They show similar trends in physical properties. Okay. Same बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन they will be kind of similar. Show similar trends. In physical properties. और क्या था कि Same similar. chemical. हाँ ठीक है. Similar chemical properties. और एक और था कि which is that successive members differ by CH2. वो भी हम डिस्कस करते हैं. Members, they differ by 1 carbon and 2 hydrogens. ठीक है. अच्छा, ये सारा हमने किया था, और alkenes में हम आ गए थे. We had started doing alkenes. ठीक है, alkenes की नेमिंग वगैरह नहीं की थी, वो भी कर ली थी थोड़ी सी. अच्छा, alkenes था कि इनको क्या कहते हैं? these are, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, that's CnH2n+2. ठीक है, इनके लिए जो वर्ड यूज होता है, that's they're known as saturated हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेट का मतलब है कि भी कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, they're going to have, अच्छा, they're going to have single bonds. Hydrocarbon means के only carbon and H atoms. ठीक है, इसके अलावा there's not going to be anything else. ठीक है. So that was what an alkane was, और alkanes randomly किसी भी शक्ल के बना लो. ठीक है, this one will have 3 H's, this one will have 1 H, this one will have, and this one will have 3 H's. ठीक है. So that's what an alkane is. और इसके ऊपर जनरल फॉर्मूला क्या है? That's कि the number of carbon atoms, the hydrogen atoms would be double that plus 2. So if I have 4 carbon atoms, तो hydrogen क्या होगा? 2n plus 2. That means double it, 8 plus 2, that's 10. And you can count. You can count and you can see कि it's got 12 hydrogens. ठीक है, 12 है कि नहीं है? Sorry, 12 नहीं, 10, sorry. It's got 10 hydrogen atoms. ठीक है. So that is C4H10. और ये मैंने कहा था, this is an example of a branched alkane.
फिर I told you कि you've got cyclic alkanes as well. So, for example, you've got 3 carbon atoms arranged in a cyclic manner, right? So this is a cyclic alkane. And remember, the general formula does not work for cyclic alkanes. इनके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है? It's not going to work for cyclic alkanes. अच्छा, जो हमारे कोर्स पर है नेमिंग, तो only naming of simple straight chain alkanes is in your course. So simple straight chain alkanes. That's it. ठीक है? इसके अलावा कोई नेमिंग नहीं करनी है हमने. One second. And how do you name substances? So I told you okay, the naming starts with, for every one of them, the naming is the same. Every molecule is going to have a prefix, which is the starting name. So your prefix is your starting name. Or that will be based on the number of carbon atoms. So you'll have meth, फिर eth, prop, but, ठीक है? You have pent, 6 हो गया hex, you've got hept, oct, ठीक है? आप लोगों के कोर्स में ना it's up till but, ठीक है? But it kind of is helpful if you know a bit more. बस सारा बेसिक याद ना हो, non and dec, right? So this means 1 carbon atom, this means 2 carbon atoms, this means 3 carbon atoms, 4 carbon atoms. Pentagon से याद रख लो, hexagon, that's 6 carbon atoms. Hept is 7 carbon atoms, oct 9 carbon atoms, and 10 carbon atoms, ठीक है? So your starting name is going to be based on this, ठीक है? Your prefix, so your prefix would be based on the number of carbon atoms. And for alkanes, the suffix is in. And it ends with in. So the suffix is going to be in. So for example, I'm going to draw each one of them. ठीक है? I'm going to start with methane. ठीक है? अब methane का क्या मतलब है? Methane का मतलब है meth means 1 carbon atom, right? So it's a 1 carbon atom and ane means alkane. So meth means 1 carbon atom and your ane means a 1 carbon atom saturated hydrocarbon. ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 carbon atom, it's got single bonds only, तो 4 H's, right? Is this clear? Yes, sir. जी sir. Yes. अच्छा, उसी तरह you've got ethane और ethane, ठीक है? तो ethane is, तो eth का क्या मतलब है? Eth means 2 carbon atoms, ठीक है?
तो वो शो कर रहा है कि you got two carbon atoms और एन का मतलब है कि alkane. तो two carbon atoms and you can draw the H's. ठीक है, every carbon atom should be making 4 bonds और single bonds. Saturated का मतलब है single bonds. ठीक है, so you've got this. That's C2H6. मतलब general formula वो use करो CnH2n plus 2, right? So 2 carbon atoms, N is 2. H would be double करो 4, 4 plus 2, 6. अच्छा, फिर इसी तरह we'll draw propane. कितने कार्बन एटम्स होंगे प्रोपेन? दैट्स कितने? 3. तो दैट्स 1 2 3 और बाकी H's है. ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर. अच्छा, फिर ये कि second. अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? C3 and H would be double plus 2, so 6 plus 2 8. वही है C3H8, right? So that's my propane molecule. अच्छा, इधर ना I'm going to teach you another way of writing formulas. That is the condensed version. तो condensed version होता है कि you can write the same thing without showing all the bonds. तो पहला कार्बन जो है उसके साथ क्या है? That's it's got 3 H's, right? So I'm going to call it CH3. Second carbon, it's got 2 H's, right? So I'm going to call it CH2. Last carbon, it's got 3 H's, so I'm going to call it CH3. Okay. So that's another way of writing formulas, which is CH3, CH2, CH3. This is by condensed structural formula. ये भी structural formula. अच्छा, this is not recommended because it's harder to actually, जैसा उसमें ना गलती पता लग जाती है. You can easily see के who's making how many bonds, right? इसके अंदर ना गलती के चांसेस ज्यादा हैं, तो it's better to avoid directly writing this unless you're very good at it. अच्छा, avoid writing this directly. उसको देख के लिख लो. यहाँ पे you can easily spot your mistake if you've drawn the wrong number of bonds. यहाँ पे it would be very hard to figure out कि the bonds are not right. ठीक है, तो avoid writing this directly. अब मसला होगा लिखना तो पड़ेगा if you're running out of space. ठीक है, it's going to be recommended if you don't have enough space. स्पेस की कमी है ना. इफ यू डोंट हैव स्पेस, अगर वो कहता है ना एक लाइन में लिख दो, तो वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला ना, द एंड दिस इज इसका पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं बताया था. दिस वन इज द कंडेंस वर्जन. ठीक है, वो जो ऊपर वाला है ना, द फर्स्ट वन, दैट्स योर डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अच्छा, उसके अंदर डिफरेंस ये है कि उसके अंदर यू शो एवरी सिंगल बॉन्ड. इज दिस क्लियर?
जी Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये वाला displayed है, ठीक है, keep this in mind. And that one is your condensed. So next is K. Okay, so that's propane, right? So we're gonna do butane now. So what is butane? Butane is कितने carbon atoms? That's 4 carbon atoms. So I'm going to draw both formulas. So bute means 4 carbon atoms. So that's 1, 2, 3, and 4. Or displayed formula क्या होगा? Or the displayed structural formula, that's going to be 4 H's, 3 H's. Is that 2 H's? Condensed formula क्या होगा? That's first C is with 3 H's. Second C is with 2 H's. Third C is also with, or fourth one is with 3 H's. Okay, that's my condensed version. Or the general formula, that's C4. H को double करो, that's 8 plus 2, that's 10. ठीक है? और इस, hopefully everyone knows this, कि this one is the molecular formula. ठीक है, ये सारा clear है? जी सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, वो हमारा molecular formula है, और अब आगे चलते हैं, which is इसका pentane चलता रहेगा. We're going to jump to the next homologous series now. So this was the first one. ठीक है, this was alkenes. ठीक है, that was the first one. इसको highlight कर लेते हैं. अच्छा, that's alkanes. अब next पे आ जाते हैं. The next one is alkenes. And alkenes have the formula which is CnH2, CnH2n. अच्छा, alkenes are unsaturated hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन का तो वही मतलब है कि it's only got carbon and H atoms, ठीक है? So that means the same thing. The word unsaturated means, ठीक है, this specific word over here. The word unsaturated means कि it's got carbon and carbon double bonds. ठीक है? Or triple bonds as well, but triple bonds are not in your course. So unsaturated means that it's not going to have single bonds, it's going to have double bonds. At least one of them. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. So at least one. Now, बाकी नाम वही है, ठीक है? The suffix is going to change. It would change to ene. E-N-E आ जाता है उसमें suffix में. ठीक है? That's what's going to happen. So now there's one problem कि you're not going to have methene नहीं होगा, ठीक है? Because for a double bond between carbon atoms, you at least need 2 carbon atoms, ठीक है? So the smallest alkene has 2 carbon atoms. It can't have one.
ठीक है. So we're going to start with ethene. अच्छा, what's an ethene molecule? Eth का मतलब है, what does eth mean? Eth means two carbon atoms, ठीक है? So this is going to have two carbon atoms. It's going to have a double bond in between. और बाकी आप H लगा लो, ठीक है? So it's going to have two H's and this one will have two H's as well. ठीक है, clear है? जी सर। और इसकी Yes, sir. कंडेंस वर्जन होगी ना, वो CH2 डबल बॉन्ड आप गायब भी कर सकते हो. यू कैन जस्ट राइट, or you can also write just CH2 and CH2, right? But normally what they do is they kind of show the double bond. अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? That's CnH2n. That simply means कि भाई, if there are two carbons, there are four H's. The H's will be double the number of carbon atoms. अच्छा, प्रोपीन पे आ जाते हैं. प्रोपीन क्या होगा? कितने कार्बन होते हैं प्रोप में? 13। ठीक है, so it has three. अच्छा, it's got three carbon atoms. अच्छा, तो prop में ना, you're going to have, but you need a double bond. मुझे बताओ, कोई फर्क पड़ता है if I put the double bond over here, or if I put the double bond between the first two carbon atoms? Does this make a difference? No, सर sir. वो नहीं, क्योंकि उसको अगर मैं इसको रोटेट करूँ ना, if I just take this, और पता नहीं रोटेट तो मैं नहीं कर सकता, but if I just flip it around, इसको उठा के ना, I pick it and I put it upside down, left, right. So these two are exactly the same. ठीक है, these two are exactly the same. पहले वाले को उठाओ, उसको उल्टा करके रख दो. इसका मतलब है these two are exactly the same. ये याद रखना कि बेंडिंग, रोटेटिंग और फ्लिपिंग or flipping something does not create a new molecule. मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ है ना, टेबल पे पड़ा हुआ है, आप उसे उठा के उल्टा करके रख दो, तो देखने में तो वो डिफरेंट लगेगा, लेकिन वो इट्स द सेम हैंड. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को उठा के ना उल्टा करके रख दो, इट्स स्टिल इज द सेम एग्जैक्ट मॉलिक्यूल. और बेंड करने से भी ना मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज. ठीक है, लाइक if I draw it like this, तो ये अभी भी एग्जैक्टली सेम है. मतलब मेरा बाजू है, ठीक है, उसको मैं आई बेंड इट एट माई एल्बो, ठीक है, तो वो अभी भी वही है, इट्स द सेम थिंग, बस उसको टेढ़ा कर दिया. ठीक है, दैट्स इट. तो रिमेम्बर, बेंडिंग समथिंग, रोटेटिंग इट, मतलब इसको अगर मैं रोटेट कर दूं, ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, if I start rotating it, उसको वर्टिकल कर देता हूँ, it's still exactly the same thing. ठीक है, is this clear? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें कि, तो that means कि these two are exactly the same. So I'm just going to draw the first one and I'm going to add the H's. तो इसके साथ कितने H होंगे? 3. इसके साथ there's going to be 1 H, और इस वाले के साथ 2 H's, right?
और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट्स गोना बी कंडेंस फॉर्मूला CH3, फिर क्या है? CH है। अब डबल बॉन्ड शो कर दो तो आगे फिर C with 2 H's, right? It's your choice. You can skip the double bond as well. That's even more condensed. अच्छा, that's the condensed formula. इसका वो general formula क्या होगा? That's going to be molecular formula. That's going to be C3H6. But it was CnH2n, right? So that's it. ठीक है, C3H6. Is this clear? जी सर। अच्छा, butene के ऊपर ना there's going to be an issue. ब्यूट क्या होता है? कितने कार्बन होते हैं ब्यूट? 4। अच्छा, ब्यूट is 4. अच्छा, now there's an issue कि there are 4 carbon atoms in a line. अब double bond, I can put the double bond over here, or I can put the double bond in the middle, or I can put the double bond between the first 2 carbon atoms. So I've got different choices to where I place the double bond. क्योंकि unsaturated double bond होगा कहीं ना कहीं. अब मुझे बताओ इनमें से which ones are exactly the same? सर The पहला first वाला और and the दूसरा वाला। last. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट बिल्कुल एक जैसे हैं. फर्स्ट को उठाओ, ठीक है, इसको उल्टा करके रख दो. इसको फर्स्ट को पिक दिस अप एंड पुट इट लेफ्ट राइट, उसको ना फ्लिप कर दो, तो इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक द लास्ट वन. तो इसका मतलब ये लास्ट वाला जो है नई चीज नहीं है. इट्स द सेम एज द फर्स्ट वन. अच्छा, ये फर्स्ट और सेकंड डिफरेंट है, but वो structurally different है. They're completely different molecules. Because over here the double bond is at the end and over here the double bond is right somewhere in the middle, ठीक है? तो ये दोनों totally different है. तो इसका मतलब है ब्यूटीन जो होंगे ना, they're going to be 2 different types of butenes. वो H's लगाना शुरू कर देते हैं कि this one will have how many H's? 3. इसके साथ 2 H's होंगे, 1 H, and this one will have 2 H's and this one will have 2 H's. इसको condense करके लिखो. That's going to be CH3, then CH2, then CH, फिर डबल बॉन्ड है और फिर CH2 है, राइट? नीचे वाले को भी ड्रॉ कर लो. नीचे वाले को, इफ यू draw the lower one, it's going to be अच्छा CH3, CH, CH. अच्छा, इसको ड्रॉ करोगे तो it's going to be what? CH3, CH डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर you got CH and then you've got CH3. अच्छा, anyway, so you've got butene. They're 2 different butenes. General formula दोनों का एक ही है. It's C4 and H8. That's the molecular formula. अच्छा, now there are 2 different types of butenes. तो यहाँ पे ना, what you have to do now is you have to tell them where the double bond is. ये जो पहला वाला है ना, this is known as but1ene. और जो second वाला है ना, this is known as but2ene. So you have to tell position of the double bond on the carbon chain. अच्छा, और काउंटिंग किस साइड से करते हैं? You count from the side which is closer. जैसे पहला वाला ना, I'm going to count from this side क्योंकि double bond is closer from that side. So it's going to be at position 1. तो ये 1 हो गया, 2, 3 and 4.
तो डबल बॉन्ड इज एट पोजिशन नंबर 1, तो ब्यूटीन इज ब्यूट-1ene, ठीक है। सेकंड वाले को ना जहां मर्जी से काउंट करो, लाइक इफ आई काउंट फ्रॉम दिस साइड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे? सेकंड वाले पे, ठीक है। Even if I count from the other side, it's going to give me exactly the same position, ठीक है। तो ठीक है, ये सारा क्लियर है। Yes. Yes, जी sir. सर। Yes, sir. तो ब्यूटीन में याद रखना कि ब्यूट-1ene होगा, और फिर there's going to be ब्यूट-2ene as well। चलो ठीक है, यहाँ से फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो ओके देन, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।